All right. So we'll do a little bit of basic first. When we were born, we were like this. The first figure that you see on the topmost left-hand side, we were all innocent. हमारे दिलो दिमाग में कुछ नहीं था, हम खाली स्लेट की तरह थे. जब हम आए थे हम एकदम ओपन थे. And the moment we take birth on this planet Earth, we come across a lot of events. In fact, our birth itself is also an event. मतलब जैसे ही हम पैदा होते हैं तब से लेके जब तक हम इस शरीर को नहीं छोड़ते तब तक हम जिंदगी में इवेंट्स को गो थ्रू करते हैं. हमारा जन्म भी हमारे फैमिली के लिए एक इवेंट था, राइट. और जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं और जैसे जैसे हम इवेंट्स को एक्सपीरियंस करते हैं, we do not take the events as they are, but we either delete them, distort them or generalize them. डिलीट का मतलब हम इवेंट को जैसा है वैसा नहीं लगते, कुछ चीजें उसमें से डिलीट कर देते हैं और कुछ चीजों को ही लेते हैं. मान लो जैसे आप घर से बाहर जा रहे हो आज और आप अपने बच्चों को आपका बच्चा है, अगर आप उसको बस स्टॉप पे या उसको स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हैं, तो आपके घर से लेके उस स्टॉप तक या फिर स्कूल तक बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखते हैं, जो आपकी आंखें देखती है, जो कैप्चर करती है. लेकिन आपके दिमाग पे वही रजिस्टर होता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है. मान लो आपने किसी को देखा था उस टाइम पे, कोई आपके फ्रेंड आए थे, कोई नेबर आए थे, या कोई बच्चे का कोई फ्रेंड आया था, उससे अगर आपकी कोई बात हुई तो वो आपके दिमाग में रजिस्टर होगा. आप बोलेंगे सुबह मैं इनसे मिली, इनसे मेरा ये बात हुई, उन्होंने ये कपड़े पहने थे. मतलब आप बहुत सारी चीजें देखते हैं लेकिन आपके दिमाग में रजिस्टर वही होता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था. आपने कुछ अटपटी चीज देख ली, सुबह सुबह आपने देख लिया कि कोई फुगे बेच रहा है, कोई बलून्स बेच रहा है, तो आपके लिए बहुत अनयूजुअल था वो कि इतनी सुबह, सपोज 5:30 बजे कौन फुगे बेचने आया. तो आपके दिमाग में रहेगा. हो सकता है आप अपने हस्बैंड को या अपने किसी फ्रेंड को बोलो कि पता है मैंने सुबह आज ये देखा. That means you have seen everything, but only few things got registered. Some things that were important to you, some things that were unusual to you, and some things that were significant because you were included. Maybe you got hurt while you were working, or maybe something happened, or there was one proposal that you got in the morning. That means जो भी आपके लिए important है या जिसमें आप included है या जो आपके लिए unusual है या जो कुछ भी हम समझ लीजिए, मतलब हम सब कुछ तो नहीं रजिस्टर करते हैं. आप, मैं अगर आपको बोलूं आपने क्या क्या देखा तो आप क्या माइन्यूटली सब बताएंगे? आप नहीं बता पाएंगे. आप ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मैंने पेड़ देखा, पेड़ में 4 पत्तियां देखी, 4 पत्तियों में से 3 पत्तियों का रंग ग्रीन था, एक का ऑरेंज था. You would have seen it, but you did not register it. That means you don't take the event. What is event? Anything that you are going through, right? Whether it is in your contact, not in contact, whether you are included, not included, but it's an event, right? So whenever you go through an event, or when you are living a life, you do not take everything the way it is. You either delete it, or what you do is you delete it or you distort it. For example, you see one couple fighting with each other. The moment you see it, if you are also going through the same situation, you will suddenly अलाइन योरसेल्फ. आपके अंदर वो एक माइंड आ जाएगा, अरे हाँ ये तो मेरी भी प्रॉब्लम है, हाँ देखो सारे हस्बैंड ऐसे ही होते हैं, ठीक है. या फिर इनकी वाइफ कैसी है, फिर भी हस्बैंड देखो कैसे, मेरे हस्बैंड कैसे. मतलब आपने क्या कर दिया? डिस्टॉर्ट कर दिया. किस चीज को आपने क्या दिया? आपने अपना मीनिंग दिया. अपना मीनिंग कहाँ से दिया? आपकी जो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में है, जो आपने स्टोर करके रखी, या आपके जो एक्सपीरियंसेस है जो आपने लिए, या फिर आपकी कुछ बिलीव्स है जो आपने बनाई है, या जो आपकी आइडेंटिटीज है बचपन से आपको आपकी मम्मी ने, आपकी बहन ने, आपकी डैड ने आपको जो दी है, या आपने खुद बनाई है, या आपके स्कूल फ्रेंड से मिली, कहीं से भी उस आइडेंटिटीज को आपने दिमाग में रख के उस इवेंट को आपने आइडेंटिफाई किया, अपना एक मीनिंग दिया, और उस इवेंट को आपने अपने दिमाग में वो जैसा था वैसे नहीं लिया बल्कि एक मीनिंग ऐड करके लिया. दैट मीन्स the events that are happening outside are not the same events that we are putting in a subconscious mind. Either we are deleting, distorting, or generalizing. What is generalizing? Giving a general meaning to everything. All husbands are like that. All housewives have to go through this pain. Or mother-in-laws are bad. ठीक है. All daughter-in-laws are rude.
whatever, जिनका जिस तरीके से एक्सपीरियंस रहेगा, उनका अपना एक जनरलाइजेशन रहेगा उस चीज के लिए. ऑलराइट, सो what is happening now, that is becoming an event 2 in our mind. हमारे सबकॉन्शियस माइंड वो क्या बन रहा है, इवेंट 2. मतलब हमारे बाहर की दुनिया में एक इवेंट हो रहा है, जिसको हम वो जैसा है वैसा नहीं ले रहे, हम अपने विंडोज के हिसाब से ले रहे हैं उसको, अपने फिल्ट्रेशंस के हिसाब से, और वो हम बना रहे हैं इवेंट 2. नाउ ऑल द पेन, मिजरी, सफरिंग जो हमारे लाइफ में है, वो इवेंट 2 की है. ना वो हमारे हस्बैंड की है, ना हमारे मदर इन लॉ की है, ना हमारे क्लाइंट्स की है, ना हमारे फ्रेंड्स की है. ये इवेंट 2 की है, जो हमने खुद ने बनाया. That means we hold entire power, all the humongous power to change, to heal, to transform, or to delete, erase that event too from our mind. And the moment we are successful changing, healing, transforming, deleting, erasing event two from our life will change. So our life is nothing but an accumulation of all the event two. जितना भी हमारे साथ हुआ है हमने, जैसे सुबह अगर आपकी कोई बहस हो गई, वो बहस हो गई, वो मुद्दा नहीं होता है. वो बहस में आपने क्या डिलीट किया, क्या डिस्टॉर्ट किया, क्या जनरलाइज किया, वो आपके लिए मुद्दा है. That is the problem. And every relationship, for example, right now, if your concern is that my relationships are not in place, so one relationship, one event that you have stored, now that one event will govern all other relationships, because अब कैसा है, वो एक बिलीफ बन गया, उसमें से एक आइडेंटिटी बन गई. क्या आइडेंटिटी बन गई, कि मैं तो हर रिलेशनशिप में सफरर हूँ, मैं विक्टिम हूँ, मैं बेचारी हूँ. लोग आके मुझे चीट करके जाते हैं, लोग आके मुझे दुखी करके जाते हैं, लोग आके मुझे परेशान करके जाते हैं, लोग मेरे साथ लंबे समय तक नहीं रहते. ये सारी क्या होगी, मेरी बिलीव्स होगी, मेरी आइडेंटिटीज होगी. और ये सब क्या है, ये ही है, ये मैंने जो भर के रखा. Now, what is happening? The moment you say that you are becoming this event too, you are basically connected to the universe with this event too. ये आपका inner world बना रहा है. This is making your inner world. और ये जो event टू का inner world है, that is connected with the universe. Now, if you say in your mind that, okay, I am, I am always cheated, people always use me, people don't treat me well, or I always get hurt in the relationship, I am the one who always suffer. ये अगर event टू है आपकी, तो universe में क्या जा रहा है? Whether you are, consciously thinking or not thinking, but that's your inner world. Forget about your thoughts, emotion. Focus that this is your inner world. Right now, your even inner world is connected with the universe, and then whatever is going to the universe will send across people and situations according to that, because you're constantly communicating. ठीक है, आप कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों के साथ. द मोमेंट यू आर एंटरिंग इन द रिलेशनशिप, आपका पहला रिलेशनशिप बुरा है, तो अब आप ज्यादा एफर्ट्स के साथ करेंगे, ज्यादा कॉन्शियसनेस के साथ करेंगे, और फिर उसमें से एक छोटी दरार आ गई, वही सारा जो आपके अंदर पड़ा है, कलेक्शन ऑफ पेन, सफरिंग, विक्टिम, हर्ट, all will come on the surface. And again, then in that particular relationship, you will start attracting, which was a fresh start, जहां पे कुछ नहीं था, जहां पे आपने जीरो से किया, लेकिन वहां पे सारी नेगेटिविटी ऐड हो गई, क्योंकि ये इनर वर्ल्ड को आपने अभी तक हील नहीं किया है. और यूनिवर्स उसको रिस्पॉन्ड करके लोगों को, सिचुएशंस को भेज रही है, एंड वही आपकी फिजिकल रियलिटी बन रही है. और अगर मुझे इस फिजिकल रियलिटी को चेंज करना है, तो मुझे अपने इनर वर्ल्ड को हील करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसमें से पैटर्न्स निकालना है. तो सेल्फ लव बोलता है, सेल्फ लव वो कॉन्शियसनेस है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जो बोलता है that I take 100 responsibility of my inner world, and I make sure that I only take things that are positive, that is good for my ultimate good. Right? So for example, I had a fight in the morning with my husband. तो अब मुझे पता है कि ये मेरे लाइफ में इवेंट टू बन रहा है. So I must take a pause, be mindful of the entire event, and delete the negative. Do not distort the event in the meaning that will give pain, hurt, or negativity in my inner world. And do not generalize things. We all are human beings. We all are dealing with many things. We all are
in our journeys, है ना, हम हमारे जर्नी पे है, all of us. So all of us are operating at a certain level of consciousness. So जब हमारी अपनी एक एक इंडिविजुअल एनर्जी है, तो हम हमारे एनर्जी के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. अगर मैंने उस तरीके से उस इवेंट को देखा, एंड देन आई कॉन्शियसली से टू माई सेल्फ दैट बिकॉज आई लव माई सेल्फ, I make sure that my event too is just the event too that I want to attract. I want to attract. उस कॉन्शियसनेस पे बैठ के आप होपोनोपोनो करो. This will give you more results. Because now when you're doing hoponopono, you're taking that from your system, and at the same time, you are uplifting your consciousness, you're evolving in your consciousness. तो वो चीज आपको ज्यादा हेल्प देंगी. ये आपको एक एक बेसिक आपको समझना है, और बार बार आपको ये अपने दिमाग में चलाते रहना है कि माई इनर वर्ल्ड is a reflection of, sorry, my outer world is a reflection of my inner world. So if I want to change my experiences in the outer world, if I'm not getting money, if I'm not getting the fulfilling relationship, if I'm not getting a blissful experience in my life, in every area of my life, then I need to work on my inner world. I don't have to touch people. I don't have to change them. I don't have to argue with them. I don't have to beg for love from them. I don't have to make them explain each and everything. Of course, physical level पे जो भी आपको करना है आप करेंगे, but that will be only 10%. Majorly, you will work 90% on your inner world. And when your 90% work is strong, the other 10% of yours will give you huge results. But if your 90% on the inner world is not strong, you're weak there, then you will have to work 80, 90%, sometimes 200% in the physical world, and you will get only 10, 20% result. तो रिजल्ट क्यों कम आ रहा है? मेहनत बहुत हो रही है, लेकिन रिजल्ट क्यों कम आ रहा है? क्योंकि मेहनत गलत डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में नहीं है. सही डायरेक्शन में मेहनत क्या होगी? वर्किंग ऑन माय इनर वर्ल्ड, वर्किंग ऑन माय एनर्जी. तो मुझे अपने एनर्जी पे कॉन्स्टेंटली वर्क करना है, एंड फॉर दैट बीइंग इन द कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ लव विल बी ऑफ इमेंस हेल्प टू मी. ऑलराइट, सो नाउ this is what my physical reality is, and if I want to change it, right, I'll need to work on my inner world. What is my inner world generally? My inner world is nothing but an accumulation of all the memories, the identities I hold, the beliefs and values that I have, the thoughts and emotions I am in, and the energy field I usually live in is nothing but my inner world. And this inner world is constantly communicating to the universe, and since it is going out, law of attraction is always there. So I am attracting not what I want, but who I am. I am attracting, again, listen very carefully. I am attracting not what I want, but who I am. I may want 5 lakhs rupees or 20 lakhs rupees in a given period, but my inner world is not that. My identities are not that. My beliefs and values are not that. My memories are not such. I have many patterns which are against my creation of abundance. My thoughts and emotions are not aligned. My energy is not perfect. My vibrational frequency is not high. No matter how hard I work, I may not get the results. And I may see some people not working any hard and they're getting the results. So what I have to do is, along with everything that I do at the physical level, मैं जो भी मेहनत कर रही हूँ physical level पे, marketing है या मेरा जो भी प्रोडक्ट है जिसको मैं बेटर बना रही हूँ, सब कुछ जो मैं कर रही हूँ, उसके साथ मुझे जिस पे सबसे ज्यादा काम करना है वो है मेरे एनर्जी पे, वो है मेरे इनर वर्ल्ड पे. So once this inner world is sorted, then whatever physical work I do, I will get greater results in it. Is this in alignment? राइट या ओके. तो हम क्या करने वाले हैं इस लाइव सेशंस में, और जो भी यूडेमी में प्रोग्राम्स है, और जो भी 90 डे का आपको जो हैंड होल्डिंग मिलने वाला है, वी आर मेकिंग श्योर दैट इन दिस 3 months टाइम वी हील आवर एनर्जी, we raise our vibrational frequency, we ignite the consciousness of self-love within, and when we do all of these, we start manifesting what we want. If you start loving yourself, you will see that you will get better in each relationship you are in.
क्योंकि बहुत सारी चीजों में आपको अब समझ में आ जाएगा मुझे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, मुझे क्या करना है। एंड again, self-love says, I will keep people who align with me in my tribe. I will not keep everyone. I don't want quantity, but I want quality. And when I am vibrating at a certain level, I will always attract such kind of people. राइट तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत सारे चाहिए, लेकिन जब आप सेल्फ लव करते तो आप देखेंगे कि आप आपकी ट्राइब या जो आपके फॉलोवर्स है या जो आपको चाहने वाले वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन आप चूजी हो जाएंगे। आपके पास कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो आपके बहुत क्लोज होंगे, and those will be the real gems of your life, because now you have started loving yourself. What is loving myself is understanding myself in and out, understanding my inner world, working on my inner world and getting the results that I want. And to get what I want, I have to become that. For example, if I want abundance, I have to become abundance. If I want love from others, I will have to become love. If I am craving for love within, that means if I have a vacuum of love within, what is the communication going? That I am not enough. I never get love. I don't attract love easily. I always find it struggle. I find it a huge struggle to get love. If this communication is going in every relationship that I am in, I will never get love because मेरे अंदर उसका vacuum है. So self love कहता है what you want from others, first give it to yourself. First give it to yourself. When you start giving it to yourself, you will automatically start attracting it from others. तो ये आप हर सेशन में जो सेल्फ लव की अंडरस्टैंडिंग आपको जो इस कोचिंग में मिल रही है, मेक नोट्स और कीप दैट इन योर माइंड एंड यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, तो आप उसको बार बार प्ले कर सकते हैं. सो मेक नोट्स, यूज इट and remind yourself every time, and with that window or with that consciousness of self love, now when you start living your all experiences or living your all relationships, you will see that you will get a good result, you will see a huge result. I had a student in my early batch who had gone through a very difficult phase in her married life. 16 years of married life, she said that only maybe a initial few months or year or maybe a 1 or 2 years went well, then everything just started collapsing slowly. Gradually the marriage started collapsing. We have two children, but we none of us are aligned with each other, and then the family is completely broken. My husband is somewhere, I am somewhere, my children are somewhere, and I do not find any love between me and my husband. There is too much of miscommunication, non communication. I feel very hurt. मेरे मुझे सब लगता है कि अब इस रिलेशनशिप में देयर इज नो स्कोप, देयर इज नो होप. सो व्हाट आई मस्ट डू. उनका पहला, जैसे आपने मुझे ईमेल किया, उनका भी यही था कि मैं क्या करूं, मैं सब पे काम कर रही हूँ, ये वर्क नहीं कर रहा है मेरा. आई सेड यू जस्ट वर्क ऑन सेल्फ लव. आप सिर्फ सेल्फ, तभी मेरा प्रोग्राम सिर्फ 45 डेज भी नहीं था, आई गेस 30 to 45 डेज का प्रोग्राम था. तब 90 डेज का प्रोग्राम नहीं था, मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ. तो तब उन्होंने, जब वो मेरे साथ थे सपोर्ट कॉल्स में और जब भी हमारी बात होती थी, आई जस्ट टोल्ड हर जस्ट वर्क ऑन सेल्फ लव, जस्ट वर्क ऑन सेल्फ लव. एंड उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया. आई टोल्ड हर यू विल गेट द रिजल्ट्स, यू विल गेट द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स. Right now when you're not getting it, keep it aside, don't worry on that. You just focus on enhancing your self love. Give yourself what you couldn't get in your life from others. Give yourself that first. So वो program खत्म होने के बाद she kept continuing, and during the program also she worked a lot on self love. तो वो एक नई इंसान बनने लगी उस प्रोसेस में. And after 1 or 2 months after the program, I saw her putting a lot of pictures of hers and her husband on the status and everything. So I just messaged her, and she was about to call me. So she said that Payal, miracles होने लगे हैं मैरिज में. मिराकल्स होने लगे हैं, मतलब जो मेरे हस्बैंड कभी नहीं करते थे और मैं हमेशा से चाहती थी, वो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं बिना बोले. एंड हमारे मैरिड लाइफ में एक सेकेंड हनीमून फेज आ गया है आफ्टर 16 years of my marriage. And now, where she was thinking that I should leave this person, there is no scope, there is no hope, कुछ नहीं हो रहा है, और अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं,
मेरी कोई नीड्स पूरी नहीं हो रही है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, आई एम नॉट सीइंग माई सेल्फ एनीवेयर इन दिस रिलेशनशिप, जस्ट वर्किंग. वाई? बिकॉज सेल्फ लव करने से उनकी एनर्जी बदल गई, उनका कम्युनिकेशन बदल गया. एंड सिंस universe keeps sending you people and situation as per your communication, since her communication changed, what she started getting changed, and things got resolved. So when we are in this program, we are not working on anyone except our own self. So when you do this, you will get the results that you are looking for, nothing else but the desired results, right? Okay, so let us start with the technique, today's technique.